welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 11 of grammar, and the name of the chapter is relative clauses, right? So यहाँ पर हम बात कर रहे हैं relative clauses के बारे में, right? So let's see, सबसे पहले ये relative clauses आखिर होते क्या हैं, right? As you can see, first of all, they are also describing us that what are these relative clauses. So, let's see relative clauses क्या हैं. The relative clauses are subordinate clauses with descriptive function. कि ये जो relative clauses हैं, ये कुछ subordinate clauses हैं descriptive function के साथ, right? They describe or identify a person or thing which may be a noun or pronoun in the main clause. कि ये किसी न किसी person या thing को describe या फिर identify करते हैं जो कि एक noun या फिर एक pronoun हो सकता है main clause में, right? The relative clauses are introduced by the relative pronouns who, whom, whose, which, that, which refer back to the noun or pronoun. कि जो relative clauses हैं ये introduce किए जाते हैं relative pronouns के थ्रू जो कि है who, whom, whose, which, that, right? जो कि refer back करते हैं noun या फिर pronoun को ही, right? For example, people caught the dog which bit a man, right? So, in this sentence, the clause which bit a man describes the dog. It acts like an adjective, so it is also known as adjectival clause, right? इस sentence में जो clause है which bit a man, ये describe करता है dog को, right? तो क्योंकि ये यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है इसीलिए हम इसे एडजेक्टिवल क्लॉज बोलते हैं, राइट? नाउ द रिलेटिव प्रोनाउंस who, whom, whose and that refer to people. अब now they are saying कि जो relative pronouns है who, whom, whose और that ये refer करते हैं people यानी लोगों को, right? So let's try to understand this with the help of these examples. Nobody likes people who are rude. A dentist is a person who looks after people's teeth. A carpenter is a person who makes furniture. Is that the waitress who served us? She has a friend to whom she phones every day. Hands up all those children whose birthday falls in October. Most of the people that I invited to my party can come, right? Now, moving ahead. The relative clauses about things or animals begin with which, whose or that. कि जो relative clauses हैं जो कि things, animals के लिए यूज किए जाते हैं वो शुरू होते हैं which, whose या फिर that से, right? These pronouns refer to a thing or animal in the main clause. ये जो pronouns है ये refer करते हैं एक thing या फिर animal को main clause में, right? Shreya has a watch that shows the date.
A mole is an animal that lives in a hole. She bought a computer which was made in Taiwan. This is the road which leads to the airport. We have written a new grammar book whose main aim is to make grammar interesting. Then, animals whose young are carried in a pouch are called marsupials, right? So, all these sentences consider the relative clauses that are used for animals or the things, correct? Now, next we have point to remember. Let's see what it is. So it says there is another kind of relative clause that is used not to identify or describe a thing or animal, but to add extra information about a particular one, right? So अब ये यहाँ क्या कह रहे हैं कि एक अलग तरीके का relative clause होता है जो कि यूज किया जाता है जब हमें किसी भी एनिमल या फिर थिंग को डिस्क्राइब या आइडेंटिफाई ना करना हो, राइट? बट टू ऐड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, पर हमें उसी थिंग के बारे में, उसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करनी हो तब यूज होता हो. जैसे कि एग्जाम्पल्स हैं, वी कैन स्टे एट द राजहंस होटल विच इज ऑन द हाईवे. Next, he caught a number 317 bus which took him to Connaught Palace. Right? Then, next we have a note. Let's see what it says. We need a comma before this kind of relative clause. कि हमें इस तरीके के रिलेटिव क्लॉज के लिए जो हमने अभी अभी यहाँ रिमेंबर पॉइंट्स में पढ़ा, उससे पहले हमें एक कॉमा का यूज करना पड़ता है, जैसे कि हमने इस सेंटेंस में किया हुआ है, राइट? नेक्स्ट, द प्रोनाउन which is sometimes used as an object in place of whom, especially in spoken English. अब ये कह रहे हैं कि प्रोनाउन हु जो है वो कभी कभी यूज किया जाता है एक ऑब्जेक्ट की तरह इन प्लेस ऑफ हुम की जगह पर, स्पेशली इन स्पोकन इंग्लिश, स्पेशली जब हम इंग्लिश बोल रहे होते हैं तब. एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द पीपल whom or who I invited to my party can come. राइट? तो हम यहाँ पर हु और whom दोनों का ही यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, when the relative pronoun is the object of the verb or a preposition in the relative clause, it can be omitted. कि relative pronoun जो है वो object of the verb है, यानी verb का एक object है या फिर एक preposition है relative clause में, it can be omitted. और इसे हम omit यानी कि इसे हम ना भी लगाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, right? So it is examples. Most of the people I invited to my party can come. The new television you bought doesn't work. Have you found the keys you were looking for? Right? Next, when a preposition is used at the beginning of the relative clause, before the relative pronoun, that is its object, the relative pronouns which or whom must be used, not that or who. Now they are saying कि जब एक preposition use की जाती है
किसी भी relative clause के beginning में, right? तो before the relative pronoun, यानी कि relative pronoun that is its object, right? Relative pronoun से पहले जो that होता है वो उसका object होता है, right? The relative pronouns which or whom must be used. ये जो relative pronouns है which और whom, ये सभी use किए जाने चाहिए, not that or who, ना कि that or who. Correct? Now, next we have students to whom grants are given have a duty to work hard. Next, I'll lend you the book from which I got this recipe. Right? Next, relative clauses are frequently used with superlatives. कि ये जो relative clauses है ये कभी कभी यूज किए जाते हैं superlatives के साथ. Right? Example, this is the best book that has been written on the subject. Next, they agreed that Shillong was the most beautiful of the hill stations in which they had stayed. Of all the movies, I've seen this is the silliest. Right? Now, after that, they say that the relative clauses are of two types. कि हमारे जो ये relative clauses हैं ये दो तरीके के होते हैं. पहला है defining clause. अब देखते हैं कि ये defining clause क्या है. So it says the cat which has the bushy tail ran first. Right? So all the above relative clauses were examples of defining clauses. यानी कि जो भी हमने clauses यहाँ ऊपर यूज किए हैं relative clauses वो सभी defining clauses थे. Now let's study about the non-defining relative clauses. अब पढ़ते हैं non-defining relative clauses के बारे में. Let's see what are they. There is another kind of relative clause that does not identify or describes a person or thing. कि दूसरे तरीके का जो ये relative clause है जो कि है non-defining relative clause जो कि ना तो किसी person या thing को identify करता है ना ही describe करता है but ये साथ ही साथ particular person या thing के बारे में information को add कर सकता है. Correct? Let's read the examples. Nisha, who comes from Mumbai, has joined our class. My uncle, whom I never met, is coming to visit us. I phoned Julie, whose voice was hoarse because of her cold. Next, when and where can be used like relative pronouns in non-defining relative clauses. कि ये when और where जो है ये use किए जाते हैं relative pronouns की तरह non-defining relative clauses में. Right? Example, we went to the park where we found Sophia waiting for us. Next, there will be a family gathering at Diwali when I'll meet my cousins for the first time. Right? Now, we have a point to remember. Let's see what it says. A comma is needed before non-defining relative clauses. कि comma की requirement होती है non-defining relative clauses से पहले. If the relative clause
comes in the middle of the main clause. अगर relative clause जो है वो main clause के बीच में आता है, commas are needed on both sides of it. तो comma उसके दोनों sides पर लगाया जाता है. Right? My uncle, whom I have never met, is coming to visit us. So as you can see, यहाँ पर हमने दोनों ही साइड पर क्लॉज के कॉमा का यूज किया है. करेक्ट. मूविंग अहेड. Now we have nominal relative clauses. Clauses introduced by the relative pronoun, what and the WH ever pronouns. Right? So, अब ये क्या बता रहे हैं nominal relative clauses के बारे में. ऐसे clauses जो कि introduce किए गए हैं relative pronouns what और सारे ही WH pronouns को use करके. Right? So, it says the pronouns what, whatever, whichever, whoever can introduce relative clauses. कि जो pronouns हैं ये सभी introduce कर सकते हैं relative clauses को. Right? These pronouns do not refer back to a thing or person in the main clause. कि ये pronouns refer back नहीं करते हैं एक thing को या फिर एक person को in the main clause. Right? They contain the thing or person they refer to because they have meanings such as anything that, everything that, anyone who, everyone who, the one that, the thing that. Right? कि ये ऐसी चीजें या ऐसे पर्सन को रेफर करते हैं. राइट. बिकॉज दे हैव मीनिंग्स. इनके मीनिंग्स होते हैं. राइट. जस्ट लाइक दैट आर मेंशन्ड ओवर हियर. सो व्हाट इज इक्वल टू द थिंग दैट शी केयर्स अबाउट मोस्ट इन हर करियर. राइट. तो व्हाट यहाँ पर उस चीज के लिए यूज हो रहा है जिसके बारे में वो केयर करती है सबसे ज्यादा अपने करियर को लेकर. करेक्ट. फील फ्री टू करेक्ट whatever anything that is inaccurate. Right? Whoever broke into the house left fingerprints everywhere. Now, whoever यहाँ पर यूज किया गया है person के लिए. Next, whoever they choose as your successor will have a lot of learning to do. Right? Now, next thing that we have is remember it. So it says clauses introduced by what or the WH ever pronouns are called nominal relative clauses. Right? तो ये जो clauses हैं जो कि इंट्रोड्यूस किए जाते हैं what या फिर WH ever pronouns को यूज करके इन्हें हम nominal relative clauses के नाम से जानते हैं. Nominal means here relating to nouns. तो यहाँ पर nominal का मतलब है noun से relate करना. Right? Now next we have remember. Let's see what are the points to remember. We can shorten some adjectival clauses by leaving off the relative pronouns. कि हम कुछ adjectival clauses को छोटा भी कर सकते हैं by leaving off the relative pronouns. जब हम relative pronouns को वहाँ पर छोड़ दें, हम उनका use ना करें. Sometimes we can leave out other words too. कि कभी कभी हम कुछ दूसरे words को भी छोड़ सकते हैं. For example, जैसे कि examples हैं, the hospital I was born in, the hospital I was born in. Right? So, my uncle is the man who is wearing a blue suit.
My uncle is the man wearing a blue suit. राइट, तो हमने देखा कि हमने यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउंस को छोड़ दिया है. राइट, बट देयर इज नो डिफरेंस इन द सेंटेंस. राइट, सेंटेंस का मीनिंग तब भी वही था और अब भी सेम ही है. करेक्ट. नेक्स्ट टॉपिक इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमास इन रिलेटिव क्लॉजेस. अब हमने पढ़ा था कि रिलेटिव क्लॉजेस के आगे भी पीछे भी हमें कॉमा लगाना पड़ता है. सो उस कॉमा का क्या इम्पोर्टेंस है? Why is that comma used? Right? Let's read. Such as, remember that a defining relative clause is written without commas. तो हमें ध्यान रखना है कि एक defining relative clause लिखा जाता है बिना commas के. Note how the meaning changes when commas are inserted. अब हमें ये ध्यान रखना है कि मीनिंग कैसे चेंज होता है जब कॉमास लगाए जाते हैं. राइट, नाउ वी हैव द एग्जांपल्स व्हिच सेज द ट्रैवलर्स हु न्यू अबाउट द लैंडस्लाइड टुक अनदर रोड. राइट, बट इन द करेक्ट फॉर्म इट इज द ट्रैवलर्स हु न्यू अबाउट द लैंडस्लाइड टुक अनदर रोड. Correct. Next, in sentence 1, we have a definite relative clause which defines the noun travelers. Right? कि sentence 1 में हमारे पास definite relative clause है जो कि travelers noun को define कर रहे हैं. Correct? This sentence therefore tells us that only the travelers who knew about the landslide took the other road. ये सेंटेंस हमें सिर्फ ये बता रहा है कि सिर्फ वो ट्रैवलर्स जिनको लैंडस्लाइड के बारे में पता था उन्होंने दूसरी रोड पकड़ ली, दूसरा रास्ता पकड़ लिया. And implies that there were other travelers who did not know and who took the road where there was a landslide. राइट, पर ये साथ ही साथ दूसरे ट्रैवलर्स के बारे में भी बता रहा है जिनको लैंडस्लाइड के बारे में नहीं पता था और उन्होंने वही सेम रूट चूज किया. करेक्ट. बट इन सेंटेंस 2 वी हैव अ नॉन डिफाइनिंग क्लॉज. पर सेंटेंस 2 में हमारे पास एक नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है which does not define or limit the noun it follows. जो कि ना तो डिफाइन कर रहा है ना ही नाउन को लिमिट कर रहा है जिसको वो फॉलो कर रहा है. राइट, द सेंटेंस therefore implies that all the travelers knew about the landslide and took the other road. कि जो सेंटेंस है ये हमें बताता है implies that all the travelers कि जितने भी ट्रैवलर्स थे जिन्हें लैंडस्लाइड के बारे में पता था took the other road, उन्होंने दूसरी रोड ली, दूसरा रास्ता पकड़ा. Right? Now next we have 2 more sentences. Just like the boys who wanted to play cricket were disappointed when it rained. Correct? Next, the boys who wanted to play cricket were disappointed when it rained. Right? कि जो बॉयज हैं जिनको क्रिकेट खेलना था were disappointed when it rained. Correct? So in sentence 3 it implies that only some of the boys who wanted to play cricket. तो sentence 3 हमें बता रहा है कि सिर्फ कुछ लड़के जिनको क्रिकेट खेलना था. There were others who didn't mind it rained or not. पर कुछ और लड़के भी थे जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि बारिश हो या फिर ना हो. करेक्ट. देन सेंटेंस 4 implies that all the boys wanted to play and all were disappointed. पर सेंटेंस 4 हमें बता रहा है कि जितने भी बॉयज हैं उन सभी को खेलना था और जब बारिश हुई तो वो सभी निराश हो गए. करेक्ट. So that was all about the chapter. I hope you all enjoyed it and you all got the things well. So that was all from my side.
Thank you so much and do have a great day ahead.